यहां से सीधे रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री का, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बातें भी कहते नजर आ रहे हैं। Products, which is why their supply chain resilience has become an increasing priority for major economies. To overcome the supply chain vulnerabilities of critical minerals, the MMDR Act 1957 was amended in August 2023 and 24 critical minerals were included in the MMDR Act. Geological Survey of India has explored more than 100 blocks of critical and deep-seated minerals. The central government has empowered to auction concessions for these minerals in August 2023. Now the central government has issued notice inviting tender for auction of 20 blocks of critical minerals on 29th November 2023. The blocks in auction contains critical minerals like lithium, molybdenum, rare earth elements, graphite platinum group of minerals, nickel glauconite, potash and phosphorite, which are located in 7 states and 1 union territory. Exploration of deep-seated critical minerals are essential for Atmanirbhar Bharat. Ministry of Mines has laid emphasis on exploration of these critical minerals by involving private agencies. In the recent 2023 amendment to MMDR Act, a new concession called Exploration License has been introduced to attract global junior mining companies in exploration of deep-seated and critical minerals. The exploration license will be granted through a competitive bidding process with revenue share from the ultimate mining leaseholder. It was the vision of our Honorable Prime Minister that people of the area from where minerals are extracted should also be directly benefited from mining. जहां से देश को ताकत मिलती है, जहां से खनिज संपदा निकलती है, चाहे कोयला निकलता हो, चाहे बॉक्साइट निकलता हो, चाहे और खनिज संपदा निकलती हो, लेकिन वहां का जो क्षेत्र है उसके विकास के प्रति उदासीनता रहती है। आप वहां के लोगों का जीवन देखो, हमारे देश को तो वो समृद्ध बनाने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और इसलिए हमने जहां से खनिज निकलती हैं, वहां के मजदूरों के विकास के लिए, वहां के किसानों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है। Accordingly, District Mineral Foundation was established in 644 districts in 23 states to take up projects for the welfare of people and areas affected by mining. More than 47,000 crore rupees has been spent on the development works under DMF through Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana in about 2,40,000 projects. Reforms are not limited to the mining in the onshore areas. The Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act 2002 was also amended in 2023 to introduce a transparent and non-discretionary auction process for granting production leases and composite licenses in the offshore areas. Offshore Area Mineral Trust has also been introduced with the aim to benefit individuals affected by mining activities and for supporting exploration and providing disaster relief. Geological Survey of India has explored more than 30 blocks of offshore minerals like lime mud, polymetallic nodule, phosphorite, construction sand and certain atomic minerals. Auction of blocks in offshore areas is envisaged in 2024. The reforms in India's mineral sector have not only increased production but have also made the sector more transparent, competitive and beneficial to local communities. These reforms are a testament to India's commitment to sustainable development and self-reliance in mineral resources. The nation's mining sector is now poised for a brighter and more prosperous future, one that is inclusive and that leads to an Atmanirbhar Bharat. धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, as we are all aware, after the series of reforms introduced by the central government in 2021, there has been a significant increase in the number of auctionable reports that are handed over to the state government. Continuing the tradition, the Geological Survey of India this year will be handling over a number of geological reports and geological memorandums. The GM and GRS of critical mineral commodities will be handed over to Dr. Veena Kumari D, Joint Secretary and Designated Officer, and the other reports will be handed over to the state governments for auctioning. A total of 87 numbers of reports, which contains 50 G2, G3 reports and 37 G4 geological memorandums, will be handed over across 14 states. Out of the 50 G2, G3 reports, 22 number of reports are for critical minerals and 28 number for non-critical minerals. Similarly, for 37 number of geological memorandums, 5 numbers of reports are for critical minerals and 32 numbers for non-critical minerals. Ladies and gentlemen, I will call the names of the respective states for collecting the reports. May I now request the Honorable Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, to hand over the report to the state of Andhra Pradesh. I request all the dignitaries on the dais to please give the awards. A total of 5 G2, G3 geological reports and 1 geological memorandums are handed over to the state of Andhra Pradesh. These reports contain commodities like manganese, copper and lead zinc. मैं आप सभी से निवेदन भी करती हूँ, साथ में यदि आप जोरदार तालियां भी बजाएंगे तो जो लोग ये अवार्ड लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी बेहद खुशी होगी, क्योंकि ये पल ही ऐसा है। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं असम से a G3 stage limestone report is handed over to the state of Assam. These are the reports which are being handed over. और इसके बाद बिहार से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी. A total of 2 G2 3 reports are handed to the state of Bihar. The commodities include gold and iron ore. And after this, I would like to call representative from Chhattisgarh. अब बिहार को ये reports hand over की जा रही हैं. A total of 2 G2 G3 reports are handed to the state of Bihar. The commodities include gold and iron ore. धन्यवाद सर. धन्यवाद. इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ से. 1 G3 geological reports of limestone and 1 G4 geological memorandum on gold is handed over to the state of Chhattisgarh. धन्यवाद सर. और अब मैं बुलाना चाहूंगी गुजरात से आए हुए हमारे प्रतिनिधि को. A G4 geological memorandum, 1 each for base metal and limestone, are handed over to the state of Gujarat. धन्यवाद सर. और अब मैं बुलाना चाहूंगी जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए प्रतिनिधि को. जम्मू एंड कश्मीर.
one G4 geological memorandum of limestone is handed over to the Union Territory of Jammu and Kashmir. धन्यवाद। और अब मैं निमंत्रण करना चाहूंगी झारखंड से आए हुए प्रतिनिधि को। कृपया आप ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करें। Two G2, G3 geological reports of manganese and iron ore and gold is handed over to the state of Jharkhand. Also, two geological memorandum of base metal and iron ore are handed over to Jharkhand. धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी कर्नाटक से आए हुए हमारे प्रतिनिधि को। One geological report one geological report and one geological memorandum of gold is handed over to the state of Karnataka. धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं केरला से आए हुए प्रतिनिधियों को। Two G4 geological memorandums of bauxite are handed over to the state of Kerala. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी को ही देंगे बिल्कुल। Two G2, G3 geological reports, one of copper and other of gold are handed over to the state of Madhya Pradesh. 6 G4 geological memorandums are also handed over, which contains a 3 bauxite, 2 iron ore and 1 base metal. धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूं महाराष्ट्र से आए हुए प्रतिनिधियों से कि कृपया आप मंच पर आकर ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करें। Five G4 geological memorandums of bauxite are submitted to the state of Maharashtra. अब मैं आमंत्रित करती हूं उड़ीसा से आए हुए हमारे प्रतिनिधि से। ऑनरेबल मिनिस्टर स्टील एंड माइंस श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक जी मंच पर ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हुए। Eight G2, G3 geological reports are handed over to the state of Odisha, which contains 3 manganese reports, 2 copper, 2 iron ore, and 1 gold. In addition, 2 G4 geological memorandums for limestone and manganese are also handed over. Thank you, sir. अब मैं निवेदन करती हूँ राजस्थान से आए हुए प्रतिनिधियों से। अब राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिनिधि। हम इन्हें 3 G2, G3 geological reports are handed over to the state of Rajasthan, which contains 2 limestone and 1 copper report. In addition, 6 G4 geological memorandums for commodities like emerald and base metals are also handed over. अब मेरा निवेदन है तमिलनाडु से आए हुए प्रतिनिधियों से, कृपया आप मंच पर आकर ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करें। 2 G2, G3 GRS of limestone
and Junite are handed over to the state of Tamil Nadu. One G4 geological memorandum of base metal is also handed over to the state of Tamil Nadu. थैंक यू मैम। और अब मैं बुलाना चाहूंगी तेलंगाना से आए हुए प्रतिनिधियों को। Two geological memorandums, one limestone and one iron ore, is handed over to the state of Telangana. धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों से कि कृपया आप मंच पर आके ये रिपोर्ट कलेक्ट करें। माननीय मंत्री जी भी मंच पर आते हुए इन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर टेक्सटाइल उत्तर प्रदेश श्री राकेश सचान जी भी मंच पर हैं और इन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं सभी प्रतिनिधियों के साथ। सभी प्रतिनिधियों का रिपोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद। Now, for handling over the critical minerals report, I would like to call upon stage Dr. Veena Kumari D, Joint Secretary, Ministry of Mines and Designated Authority of Critical Mineral Blocks. कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर वीना कुमारी मैम का। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको पुनः परेशान करूंगी, लेकिन कुछ पल के लिए आप अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, in order to harness the full potential of the maritime resources of the country, the Government of India has given increased impetus on the blue economy. In this endeavor, Ministry of Mines has recently amended the Offshore Area Minerals Amendment Bill 2023. After the amendment of OAMDR Act in 2023, GSI prepared 13 blocks of auction of offshore mineral blocks, 3 construction stand, 4 lime mud, 6 polymetallic nodules. The geological memorandum for construction sand is prepared in the territorial waters and contiguous zone of Kerala. Around 174 million tons of lime mud resources are estimated of Porbandar, Gujarat, within an area of 215 square kilometers. The geological memorandum for the polymetallic crust and nodules is prepared for 7 blocks within an area of 602 square kilometers in the Western Seawall. Andaman Sea has been delineated based on visual interpretation of raw footage and chemical analysis of sample collected. No resources has been estimated in these blocks. Now I request Shri Dinesh V. Ganveer sir and the Administrative Authority to receive the geological memorandums of 13 offshore mineral blocks from the Honorable Minister. I request Minister sir to please hand over these mineral blocks to Shri Dinesh V. Ganveer sir, Deputy Director, GSI. Thank you. GSI has also prepared 6 other blocks of construction sand within the territorial waters of India. Resources estimated up to the depth of 2 meters below sea bed in the 9 blocks in 992.94 million tons. The total area of the 9 blocks is 511 square kilometers. I would again request Shri Dinesh V. Ganveer to receive GM of these blocks.
Besides these mineral commodities, GSI has carried out extensive mineral exploration in the territorial waters of India and carved out 16 blocks of heavy minerals. The estimated mineral resources of HM are 95.88 million tons, spanning an area of about 1,317 square kilometer located in off Maharashtra, Ratnagiri, off Kerala, Tamil Nadu, and many more. I would like to request Honorable Minister to hand over the GMs of these 16 heavy mineral blocks to the representative of Department of Atomic Energy. The Offshore Area Minerals Development and Regulation Act 2002 was also amended in 2023 to introduce a transparent and non-dictionary auction process for granting production leaves and composite license in the offshore area. Thank you, sir. In the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act, Exploration License EL has been introduced for undertaking some operations or prospecting operations for certain deep-seated and critical minerals. As a follow-up, GSI has carved out a total of 20 mineral blocks under exploration license for critical minerals introduced, including mineral commodities like RREE, RM, gold, copper, lithium, diamond, base metal, PGE, zirconium, tin, tungsten, potash, and vanadium, which are located in 14 states, namely Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu and Kashmir Union Territory, Jharkhand, Karnataka, Ladakh Union Territory, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana, and Uttar Pradesh. Ladies and gentlemen, the Geological Survey of India has been historically carrying out exploration of coal in India. Through its region exploration, GSI has carved out several coal blocks which are put on auction regularly. GSI has been traditionally handing over blocks of coal to Ministry of Coal for auction. In this endeavor, this year, 5 reports of GSI related to coal and lignite are handed over to the Ministry of Coal for putting these blocks on auction. These blocks are of G2, G3 stage and spread over the state of Odisha, Chhattisgarh, Telangana 2, Tamil Nadu, and to collect this, I may call Shri B.K. Thakur, Director Technical, Ministry of Coal. I request everybody to please put your hands together. Thank you. Envisaging the vision of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for sharing the benefits of mining to the people of mining area, the Ministry of Mines in 2015 introduced amendments to the MMDR Act 1957 to establish district mineral foundation in every district of country affected by mining. These DMFs have completed more than 1.5 lakh projects in various sectors such as health, education, drinking water, women and child, among others for the development of areas and people affected by mining activities. Now, I would like to call and request Honorable Minister of Mines, Coal and Parliamentary Affairs to unveil the coffee table booklet titled Building Trust, Transforming Lives. This book will give a glimpse of DMF's untiring contribution made towards positively impact the lives of people. This book will showcase the best practices and notable work by District Mineral Foundation, that is DMF, under Pradhan Mantri Khanij Kshetri Kalyan Yojana. The coffee table book has 14 stories of interventions of welfare and development and livelihood of people in area affected by mining from across the country.
Thank you. Through DMF, impactful projects have been taken by District Mineral Foundation and the remote parts of the country bring perceptible change in the life of the people of this area. Now, I would like to request the dignitaries on stage to please launch the ASP module. मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप एएसपी मॉड्यूल का अनावरण करें। डिजिटल अनावरण है जिसकी संख्या आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। The average scale price, that is ASP module, is an online platform wherein the real-time data of submitted returns is automatically fetched from the returns module, that is ibmreturns.gov.in, and therefore in the portal itself with the tools provided there to generate a draft ASP. The draft ASP is discussed and deliberated in a high-level committee, and the suggestions are incorporated in the ASP module to generate the final ASP, which is then published. Overall, the system facilitates the ease of going business and cuts down the time required to generate the ASP. Now, ASP for the previous month can be released, जो कि अभी रिलीज हुआ ही है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप स्टार रेटिंग माइंस का भी डिजिटल अनावरण करें। Star rating of mines was conceptualized and a template for the purpose was formulated in the year 2016 to evaluate the performance of the mines on the basis of sustainable mining. Over the years since its launch, it was observed that small mines could not come up to the level of large mines in the expenditure over SDF, as well as other criteria specified in the self-assessment template. Based on the industry feedback and the experience of previous years, new star rating templates have been prepared for small mines and large mines separately instead of a common star rating templates for all the mines from the year 22, 23, 24. Ladies and gentlemen, today marks a significant milestone in the realm of minerals exploration in our great nation. The central government, with a vision to accelerate exploration activities and introduce cutting-edge technology, has taken a historic step by including private exploration agencies in the process. The MMDR Act was amended in 2021 to empower the central government to notify entities, including private ones, to undertake prospecting operations. So far, a total of 16 private agencies have been notified by the central government. I am thrilled to announce that, in line with the progressive approach, the central government has notified 4 more private exploration agencies to join the League of Pioneers in mineral exploration. Today, in the grand occasion, we have the honor to witness the handing over of notification to these distinguished agencies. Without further delay, may I now request the Honorable Minister of Mines, Shri Prahlad Joshi ji, to hand over these things. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड को कि कृपया आप मंच पर आ जाइए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जिन 4 एजेंसीज के अब हम नाम लेने वाले हैं, ये भी अब इम्पैनल हो चुके हैं। ये बड़े हर्ष और गर्व की बात है और रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड इस वक्त प्रशस्ति प्राप्त करते हुए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी पीआरबी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से।
PRB Infra Projects Limited. आपको भी ये प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट दिया जा रहा है फॉर द इम्पेलमेंट. कुंदन कॉन्सेंट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड. अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी. आपको भी इम्पेनलमेंट की बहुत बधाई भी देना चाहूंगी साथ ही में. इसके बाद मेरा निवेदन है जेम्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कि कृपया आप भी मंच पर आइए. धन्यवाद सर. धन्यवाद. The MMTR Act 1957 was amended in 2015 to introduce auction as the means of allocating mineral consents to bring in great transparency and remove discrete in all the levels in grant of mineral concessions. The method of auction also ensures that the state government get their fair shares to revenue accrual from the auctioned mineral blocks. A total of 336 major mineral blocks have been auctioned by state government across the country since auction regime was introduced in 2015. In the year 2022-23, 105 major mineral blocks have been auctioned in the country, which is the highest ever auction tally in financial year. I think for this a huge clap should be there. This could not have been achieved without active involvement of the state government. In order to appreciate and acknowledge the performance of the best performing states, which have been at the forefront of maximizing their mineral potential, Ministry of Mines present, I would like to call Karnataka first and then Andhra Pradesh for the third position. I would like to call Shri S.S. Mallikarjun, Honorable Minister of Mines and Geology, Government of Karnataka, to please receive this award. And Shri V.G. Venkata Reddy, Director, Department of Mines and Government of Geology. Shri V.G. Venkata Reddy. Dhanyavad. Now I request Shri Anurag Diwan, Deputy Director Minerals Resources Department, Government of Chhattisgarh, to receive the award of appreciation for securing second position for successful auction of 20 blocks. धन्यवाद. और अब तालियां और भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अवार्ड लेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और उनकी टीम फॉर सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन फॉर सक्सेसफुल ऑक्शन इन 29 ब्लॉक्स. Team Mineral Resources Department, Government of Madhya Pradesh are receiving the award for securing first position for successful auction in 29 blocks. Dhanyavad. Through amendment to MMDR Act in August 23, a new license called Exploration License has been introduced. In order to implement
the provisions of the Amendment Act and to enable the state governments to auction exploration license, amendments have been made in subordinate legislations. The amendment in the rules, namely Mineral Auction Amendment Rule 2024, Mineral Consents Amendment Rule 2024 and Mineral Consents and Development Amendment Rule 2024 are notified and released today. May I request the Honorable Minister of Mines to kindly unveil the booklet containing the amendment rules. एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रूल बुक जिसे आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर स्टील एंड माइंस ओडिशा, कृपया आप अपना उद्बोधन दें। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक जी का। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी जी, all the minister of state dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I am happy to be here today at the National Mines Minister Conference 2024 being organized by the Minister of Mines, Government of India. I am also feel very happy to share some of the best practice in the administration of mines and mineral sector of our state. Odisha, with among resources of iron, ore, coal, chromite, and other minerals, occupies a prominent place as one of the leading mineral producing states in the country. The state of Odisha has ensured a timely and effective implementation of the amended provision of the law and has become the leading state in successfully conducting auction of 44 mineral blocks so far, including 23 mining leases, which had expired by May 2020. With the expiry of such large number of productive mining leases, there was an apprehension of sharp decline in the mineral production and supply of raw materials to the end user of industry. But the state government successfully carried out the auction of all these mining leases and ensured continuity of operation of all the blocks following due to process as per the applicable law. Two of the expiring leases where the grant order could not be issued due to the non-compliance of the terms of conditions of the LA1 by the respective preferred bidders have been put to the operation through the state owned PSU and OMC with the approval of the Minister of Mines, Government of India. The whole process of auction and operations of the auction mineral blocks have been conducted with the absolute transparency and strictly adhering to the applicable provision of the law. In this regard, the state of Odisha has become the leading state in the country, for which it has received the Rashtriya Khanija Vikas Puraskar first prize for the best performing state in taking initiative in exploration, auction and operations of mines. It comes to ₹3 crore prize money. Secondly, our state has implemented an effective online system named Integrated Mineral Mines Management System I3MS since 2011 and 12 for taking end-to-end transaction of minerals, that is
from extraction in the mines to the transportation and consumers at the end use units, which is another best practice to ensure an effective and transparent mineral administration in the state. Now there is no scope to extract minerals beyond the approved limit of production under the different statutory clearance. No mineral transportation can be undertaken without permit duly issued online by competent authority. The mineral carriage have also been registered under ITMS with the provision of a GPS tracking system. The robust online system has helped detecting unlawful mineral extraction or transportation, if any, thereby plugging the leakage of a mineral revenue in the state. This has led to a constant growth of a mineral revenue of the state over the years. All the above initiatives of successful auction of mineral blocks and timely operationalization of the said mining leases have resulted in constant growth of mining revenue for the state. That it is heartening to inform that as against rupees 11,020 crores and rupees 13,791 crores of mineral revenue during 2019 and 2020 and 21, we have been able to collect 49,858 crores of mineral revenue during 2001 and 2002 and 38,075 crores during 22 and 23. During current year, the revenue collected up to end of December 23 stands at 30,900 crores. Further steps are also being taken for intensify the mineral exploration in the state so that more and more mineral blocks can be brought to readiness for auction. I am happy to inform that the August gathering that as many as 174 exploration projects covering mineral blocks of iron, manganese, limestone, dolomite, bauxite, chromite, and graphite have been undertaken in last 5 years, out of which exploration has been completed in 138 blocks, and the same is progress in 36 blocks. As such, 120 blocks, including 6 expiring leases, are being brought to readiness for auction in the next 4 years. In order to ensure enforcemental safeguard against the mining operation, our state has adopted the practice of plantation in the mining affected areas through Odisha Mining Corporation Limited, wherein 10 plants are being planted for every ton of mineral being extracted. Our state has adopted 5T Tech strategy under the direction of Honorable Chief Minister with a focus on teamwork, technology, transparency, and timely leading to transformation in the mining sector, strengthening of mineral exploration, mineral resources mapping, establishment of a core liberty under operation of I3MS, etc., are various initiatives being taken up under the 5T technology strategy. Successful auction of mineral blocks and subsequent operationalization of the said mining leases depend on the timely receipt of all the statutory clearance by respective grantees of the mining lease. In this regard, the continuous effort and the action of the Ministry of Mines in bringing suitable amendment to the Act and rules is commendable.
I would take this opportunity to request Honorable Minister of Coal and Mines and Parliamentary Affairs, Sri Prahlad Joshi ji, to take up these matters with the Ministry of Environment and Forest and Climate Change for issuing necessary instruction, clarification to the State Department for a smooth implementation of the amendment provision of the Act and rules. I am quite sure that with the participation of many states, this conference will offer an ideal platform for deliberating on the various policy intervention and concerns of all stakeholders of mining sector of the country. I wish this conference all success and hope that it will lead to sustainable growth in this regard. Thank you. Jai Hind. Vande Utkarjan. धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री एस मल्लिकार्जुन जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी कर्नाटका, कृपया आप अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, Honorable Minister for Mines, Coal and Parliamentary Affairs, Dr. Manohar Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, and V.L. Kantarao, Secretary Mines of India, Government of India, Sanjay, Additional Secretary Mines, all my fellow colleagues, representatives of various states and union territories across the country, secretaries and other officials of union and state government, all the officials, participants, print and visual media friends. Over the past few decades, India has undergone huge transformation and emerging as one of the fastest growing major economies in the world. As we all know, our goal is to achieve 7 trillion economy by 2030. India's economic journey is nothing short of fascinating, marked by reliance, innovation and commitment to progress. With the ambient natural resources, the mining industry has emerged as a critical sector contributing significantly to foreign exchange, employment and overall socio development of the country. Considering the 7 trillion economy target, role of the minerals and mineral-based industries will definitely play a vital role, and demand for minerals with all manifold increase in coming days. Karnataka, the 6th largest state in India, is blessed with diverse range of minerals, wealth contributing significantly to its economical development. Some of the major mineral sources are like iron ore, manganese, limestone, dolomite, gold, burric, copper, chromite, granite, etc. These minerals forms the basic raw material for many industries, driving economic activities and supporting the creation of wide range of products that are integral part of our daily lives, from talcum powder to electronics gadgets. Hence, sustainable and responsibilities mining practice are critical to ensure continuous and reliable supply of these essential raw materials. Karnataka is one among the major contributing states in overall mineral production, says 13.2% in the year 22-23. Under the able leadership of Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji, Karnataka has been ranked number 1 state in ease of doing business by Niti Aayog. State has created a very conducive environment for many startups and is evident by having nearly 400 fortune companies. Hence, I appeal all the industry partners and government companies to make
good use of the facilities available in Karnataka to harness the potential natural resources. I am delighted to be part of the second state mining ministry conference, which has provided me a platform for sharing our best practice and known about many advancements in the mining sector, like exploring sustainability practice and mineral policies, which are the need of the hour. This is not only providing me insight of the largest and the latest developments in the minerals sector, but also providing me an opportunity to network the many fellow colleagues from various states. Our government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, considering is given to be boosting the exploration activities in the state by creating necessary infrastructure support. In view of the growing demand of minerals, I urge both private and government entities to actively engage in exploring activities within our state, particularly on minerals like manganese, platinum group, elements, nickel, base metal, gold and critical minerals. In pursuit of sustainable mining solution, Karnataka devised and optimate realistic minerals policies and regulations with respect to minor minerals, curbing the illegal mining activities with sufficient technology intervention of, for example, the policy of one state GPS to track all mineral transportation vehicles in real time, lease management system, and end-to-end software solution for minerals administration, centralized district mineral foundation portal, project management system with real-time data sharing with publics. The Ministry of Mines has brought in several reforms in mining sector, including auction of mineral blocks and establishment of dedicated funds for the National Mineral Exploration Trust (NMET). The District Mineral Foundation (DMF). This interventive have not only enhanced the revenue of the state but also benefited the addressing various mineral related challenges. This approach has changed the mindset of the general public towards mining sector in positive way. I appeal to the Honourable Ministers of Mines to resolve the following concerned on priority. Make some provision to engage the state government in auction process of critical and strategic minerals, especially at the stage of basic price fixation. To provide suitable clarification on the long pending issues of considering the enormous laterite as minor minerals or major minerals to grant mineral concessions as per applicable law. State government has sought clarification in the month of October 2022. Suitable explanation in computing royalty and value of mineral dispatch of lumps, fines generated in the auctioned mines, as the provision of law to charge royalty on dispatch quantity has huge bearing on collection of royalty and value of minerals dispatched to the state exchange. The recent amendment to the Forest Conservative Act and guidelines to that effect had disappointed us due to more stringent condition in getting the FC for exploration. Hence, both Ministry of Mines and MOEFCC needs to be revisit the guidelines and smoothen the process of FC to exploring projects to get tangible benefits to states and nation, to make provision for inclusion of additional adjacent non-mineralized areas for existing mining lease for dumping all allied activities, to put a transparent mechanism for publishing average sale ASP of iron ore and other materials. Amendment of Ministry of Mines dated 23/5/23 on applicability of Section 8B of auctioned amalgamated blocks by omitting the word prior approval under Section 2(3) of entire lease area.
के मंत्री माननीय मल्लिकार्जुन ने अपना विषय रखा। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे उड़ीसा के प्रफुल्ल जी, मिनिस्टर प्रफुल्ल मलिक जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राकेश सचान जी, वास्तव में आपका बहुत अच्छे से आपने विषय रखा। खादी ग्रामोद्योग मंत्री और खनिज मंत्री माननीय सचान जी, माननीय कोनियक जी, एमएलए नागालैंड, हमारे अपने स्टेट के और सरकार के सचिव, वैसे तो कांता राव जी बहुत सुयोग्य ऑफिसर है। इस अवसर पर आपका लाभ हमारे स्टेट को भी मिलेगा। वैसे तो पूरे मंत्री जी ने दिल खोल के खजाना दिया है देश भर के लिए। जिस प्रकार से आप माइनिंग को चला रहे हैं, इसी कार्यक्रम में माननीय लोहिया जी, अतिरिक्त सचिव, और आप सब, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां जुड़ी हुई है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन संपदा, जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो हमारे अपनी पृथ्वी की अंदर की जो परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है मध्य प्रदेश को, और ऐसे में हमारी ये भूमि संस्कार की, संस्कृति की, सभ्यता की, संपदा की और अनेकानेक कारणों से, धार्मिक दृष्टि से भी और उर्वरा की दृष्टि से वसुंधरा का जिसको आशीर्वाद है, ऐसे मध्य प्रदेश में देश भर के अलग अलग सेक्टर से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खनिज सम्मेलन को हमारे अपने मध्य प्रदेश का मौका मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। मैं आपका आभार मानता हूं, आपने हमको मौका दिया। और सोने पे सुहागा तब हो जाता जब हमको आपने माइनिंग के नीलामी में भी प्रथम पुरस्कार दिया है। मैं आपका उस नाते से भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आज का ये हमारा सम्मेलन खनन उद्योग की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में अपना मार्ग ढूंढने में न केवल सफल होगा, बल्कि अपनी नई अर्थव्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें एक बड़ा योगदान देगा। यद्यपि मैं लिखा हुआ तो बहुत अलग लाया था, लेकिन आपसे चर्चा करते करते और कांताराव जी से जानकारी जुटाते जुटाते जिस प्रकार से आपने बात बताई, मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहले हमारे आप खनिज मंत्री ऐसे होंगे जिनने बहुत सारे बदलाव करके इस विभाग को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके कारण से इसकी एक अलग पहचान बनी। और जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, जिस ढंग से यहाँ एक के बाद एक नए नए प्रकार के, जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है, हर एक रंग अलग अपना आनंद देता है, अलग एहसास कराता है। मुझे लगता है कि आपकी उन सारी बातों से ही, जब आपने कहा कि हमारे नए रूल्स बनाने की आपने किताब का विमोचन कराया, आपने कहा कि यहीं यहीं आप लगातार एक के बाद रिव्यू करते उस तरह से कह रहे इस सेक्टर को इतनी और ये गुंजाइश हो गई, इस राज्य को ये गुंजाइश हो गई, इसके साथ ऐसी संभावना जुड़ी हुई है। और आपने कहा उड़ीसा जैसा, आपने तो वास्तव में उड़ीसा के लिए जो बताया, तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के पीछे पीछे हम भी चलेंगे, जो 50,000 करोड़ का आपने माइनिंग का सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उपलब्धि दी। जहां आपको ये भी मालूम है कि ये थोड़ा सा राज्य कमजोर है, ये उदात्त भावना भी आपकी विशाल, बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं, तो महाकाल के बारे में ये विशालता भी हमको मालूम है। कल ही कल हमने अयोध्या का आनंद देखा है, भगवान राम का, और उनकी उस काल को याद करते हुए देखें परमात्मा का राम राज्य जब आया होगा जिस काल में, तो राम राज्य में केवल वो अपने जीवन की व्यक्तिगत कठिनाइयां तो है ही, लेकिन उनने अपनी वन संपदा, धन संपदा और दुनिया के अंदर जो विराट व्यक्तित्व दिखाया, उसके कारण से राम राज्य आया। और आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस ढंग से काम चल रहे हैं विभागों के माध्यम से, आप अपनी पृथ्वी तो ठीक है, अपनी देश की धरती भी ठीक है, लेकिन देश की सीमाओं से लगे समुद्र के अंदर की भी आपने हमारी संपदा को खोज निकाला है और उसके अवसर दे रहा है। ये और सौभाग्य की बात है, ये खुले मन से सबके बीच देना। और ये बात भी सही है कि ये पुराने जमाने में एक पिक्चर आई थी काला पत्थर, बड़ा उस काला पत्थर की कहानियां अलग अलग प्रकार से दिखाई देती थी।
सच मानो मुझे भी आज के इस कार्यक्रम के आने के पहले यही डर लग रहा था कि माइनिंग विभाग है, मतलब ये काजल की कोठरी है, इसमें भगवान जाने क्या होता होगा। लेकिन आपने उसके ऐसे दरवाजे खोले चारों तरफ से, ऐसा एहसास कराया कि ऐसा लग रहा है हर ओर से ये शुचिता की बयार आ रही है, एकदम साफ सुथरेपन का हवा आ रही है। और मैं तो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, जिनका शासन सुशासन के नाते से जाना जाता है। लेकिन वो 2000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल सकता हूं कि वर्तमान के हमारी सरकार के मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री उसी का परिलक्षित रूप दिखाई दे रहा है। विक्रमादित्य का काल हमको एहसास करा रहा है कि हाँ, वो काल कितना सुंदर होगा, जिसके आधार पे हमको गर्व है हमारी संस्कृति पर। क्योंकि जिस ढंग से आपने काम करना प्रारंभ किया, आपने अभी कुछ एजेंसियों को जोड़ा, जिनका आपने कहा गजट का नोटिफिकेशन हुआ, उसके आपने प्रकाशन में जो मैंने सोच रहा था कि क्या काहे के लिए बुला रहे हैं एजेंसियों को, क्योंकि आमतौर पे किसी एजेंसी को जोड़ करके सम्मानित करना किसी सरकार के लिए हमेशा शंकास्पद होता है। लेकिन आपने कहा कि इनको जोड़ इसलिए रहे कि ये अपना शुचिता से काम करेंगी और जिस स्टेट में जाएगी वहां के मिनरल बताएगी और स्टेट का पैसा कुछ नहीं लगेगा, भविष्य में संभावना बड़ी लेके अलग आएगी और पैसा भी सारा भारत सरकार देगी। तो ये तो आम के आम गुठली के दाम होगा, इससे बढ़ के क्या मिलेगा किसी को? इससे अच्छा कोई मौका मिलेगा क्या? हमारे खनिज संपदा की जानकारी स्टेट को खुद को मिल जाए और स्टेट अपने बलबूते पर उसको ऑक्शन में ले जाए। और ऑक्शन के लिए भी इतने अच्छे नियम आपने बनाए कि जिसके आधार पे हमको प्रथम पुरस्कार मिला। अदरवाइज स्टेट को एक्शन करे और आरोप नहीं लगे, ऐसा होता नहीं। और उन आरोपों से बचाने का काम भी आपने किया। और उसमें आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत जोड़ते थे। प्राइवेट सेक्टर आंख मीच कर कोई भी क्या ले लेते, भगवान जाने क्या होता था। लेकिन राज्य की मूल धन के लिए मूल जिसका अधिकार है, वहां बड़ा शून्य और बड़ा गलत मैसेज जाता था। लेकिन ये आज अच्छी बात है कि हम अपने इस रत्नगर्भा वसुंधरा माँ के अंदर से आंचल से निकाल करके हम अगर कुछ लेकर आते हैं तो अपने उस राज्य की उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। और उसका आपने प्रदर्शनी के दरमियान भी देखा है, जिस ढंग से हमारी प्रदर्शनी में आपने उस अपने वेलफेयर फंड के आधार पर जो काम करने की शुरुआत की है, हमने आपके सांची के मिष्ठान भी खिलाने का प्रयास किया है। वो छोटे छोटे अंचल के लोग जिनके दर से मिनरल निकलता है, उनके लोग उनकी जिंदगी बदलने में भी वो बड़ा, यद्यपि धनराशि भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनको संबल प्रदान करने का मौका मिलता है। उसी प्रकार से आपने कौन सा क्षेत्र छोड़ा, कोयल भी आपने देखा तो गोल्ड भी आपने देखा। इधर या तो हीरे और पन्ने की धरती भी मध्य प्रदेश में आती है, तो बड़ी संभावना अपने इससे है। निश्चित रूप से आज का हमारा सम्मेलन, मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने अंदर की जो कठिनाइयां विभिन्न विभागों की है, फॉरेस्ट से लेकर के कई सारी कारणों से, लेकिन आपके नेतृत्व में हम सब प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश ये जो आपने आज का दिन दिया है, ये एक तरह से मील का पत्थर बनेगा और हम आगे बढ़ करके उन सारी संभावनाओं को लेके चलेंगे, जिसके कारण से अब आप बताइए कौन से, आपने तो कहा कि भविष्य में संभावना हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम क्या मिला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहाँ चला जाएगा जम्मू कश्मीर पता नहीं, लेकिन पीछे पीछे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश की संभावना भी है। हम भी कोशिश करेंगे लिथियम हमारे यहाँ भी मिले और इसी प्रकार से और भी सेक्टर में जो जो हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री G20 में माननीय मोदी जी ने अपने देश की धाक दुनिया में बनाई और साख दुनिया में बनाई है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ करके पर्यावरण संरक्षण करते करते माइनिंग के क्षेत्र में नित नए आयाम को छुएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देवियों और सज्जनों, इससे पूर्व कि मैं इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय से सभा को संबोधित करने के लिए अनुग्रह करूं, यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा कि मैं आपसे संबंधित एक परिचय एवं खान मंत्रालय में आपके पदार्पण उपरांत आपकी करिश्माई और कार्य समर्पित यात्रा की एक आंशिक झलक प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आपने अपने जीवन में असीम उपलब्धियों के साथ प्राप्त किया है। सामाजिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति आपने सदैव कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। जरूरतमंदों के लिए आपके हृदय में हमेशा से मानवीय दृष्टिकोण रहा है। इससे पहले जिला अध्यक्ष के रूप में और बाद में पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई में महासचिव के रूप में आपको समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में आयोजित खान और खनिज पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत खान मंत्रालय ने 59 नए खनिज ब्लॉकों को राज्य सरकार को सौंपा है। साथ ही DMF फंड को सुनियोजित कर 7 सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन वाले राज्यों को चिन्हित कर आपने उन्हें आगे बढ़ाया है, उनका मनोबल भी बढ़ाया है। आपके बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया किस तरह से आप चीजों को देखते हैं और उनको कैसे आप